Well, friends, let's start. I start my day with lukewarm water in this चांदी का गिलास. अगर मैं हर चीज की इंपॉर्टेंस बताऊंगा तो वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग. ऑल आई कैन से इज स्टार्ट टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर और अ लोटा ऑफ वाटर, या तो चांदी के गिलास में या तांबे के लोटे में. इट्स गुड any which way, Well, then I go for my walk and yoga and pranayam and making videos and teen mandiri walk, this walk, that walk. Come back home, relax for some time. Then I take just this half a glass of juice, you can say. This is Karela, neem, amla, little bit of हरी मिर्च, yes, it's very very good. जो तोते को खिलाते हैं ना और वो मीठा बोलना शुरू हो जाता है. And maybe sometimes little bit of mint or something like that. This is not juice actually. Everything is washed, put in a grinder, थोड़ा सा पानी डाल के grind कर दिया, and it's wonderful. So well, I take this, then get ready, do my puja routine, this, that. Breakfast is generally, different on different days. Some days it is a multigrain chilla, some days it is a besan chilla, some days it could be a parantha also. Yes, parantha with little bit of white butter, homemade butter. I love that. And most of the days I do something with cornflakes plus oats. Muesli also once in a while, but cornflakes and oats, What I do is just put them in some water or some milk, give them 3-4 boils. But punch main punch line, main usme power ingredient hai, that I want to share with you. Now this funny looking powder which you are seeing is nothing but it is बादाम, काजू, अखरोट, सबसे अधिक क्वांटिटी में अखरोट, मखाने, कच्ची मूंगफली, and one more thing, that is चने, भुने हुए चने. Understood? बादाम, अखरोट, काजू, मखाने, कच्ची मूंगफली, भुने हुए चने. Quantity you can decide the way it is, doesn't matter. But I like to keep kaju to the minimum, mungfali also a little bit, but akhrot and chane to the maximum. And then what I do is, I add in this, while grinding only, kali mirch, choti ilaichi, moti ilaichi, dalchini, long, एंड लिटिल बिट ऑफ सौंठ पाउडर. वो ग्राइंड करना मुश्किल होता है तो वो मैं पाउडर ला के उसको ऐड कर देता हूं. सो इसको मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंडर में बना लीजिए, मिक्सी में बना लीजिए. एंड वेन एवर आई टेक एनीथिंग इन द मॉर्निंग विच इज टू डू विद ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स और समथिंग, इसका नियरली 1.5 स्पून आई पुट इन दैट. जब भी मन करता है मैं दिन में कभी इसको लिटिल बिट ऑफ लूकवार्म और लिटिल बिट नॉर्मल टेम्परेचर मिल्क में डाल के भी पी लेता हूं. इट्स अ ब्यूटिफुल वंडरफुल प्रोटीन शेक. और ये जितने मार्केट में मिल रहे हैं प्रोटीन शेक, इट बीट्स देम हॉलो. सो एंड इट इज वेरी गुड फॉर पीपल लाइक मी, यंग एंड ब्राइट पीपल लाइक मी, जिनके दांत भी थोड़े थोड़े चरमराने लगे हैं. If you take dry fruit, it generally gets stuck, and I don't like that sticky feeling. Best is grind कीजिए, powder बनाइए, go ahead. Okay. My next favorite drink. This is around 11ish, 11:30, maybe 12. Black coffee, which we all do. I put little bit of squeezed, little bit of nimbu in that, lime. This is the hack. This is the weight cutter's delight, Black coffee with little bit of nimbu. Well, then lunch is usual homemade stuff, some
sabzi, some curd, and this and that. But the real punch in that is a chutney, a green chutney, which I take every day in lunch. Look at this. This is now pudina. I keep it here. This is beetroot, green chili, red chili, some grapes. Yes, some grapes. I love grapes, especially these dark colored ones, you know. Little bit of garlic, if you're okay with lasan. And of course, ginger. Thoda sa adrak, which today, you know, is not kept here. So all these things, let me tell you once again, maybe, you know, dhania or pudina, whatever is available, beetroot, दोनों तरह की चिल्लीज, लाल और हरी. ये चिल्लीज जो है ना, ग्रीन चिल्लीज, ये बहुत ही एक पावरफुल चीज है. इसका मैं कभी बाद में वीडियो बना के आपको बताऊंगा. ऑल आई कैन से इज द स्वीटर यू वांट टू स्पीक, द सॉफ्टर यू वांट टू स्पीक. जितना आप चाहते हैं कि जबान साफ हो, वाणी मधुर हो, तो ग्रीन चिल्ली को जरूर लीजिए. ग्रेप्स ऑफ कोर्स, देन गार्लिक, ginger is missing. Amla is also very, very important ingredient in this. That is also missing. I invariably put half of amla also in this. So well, here goes the lunch. That's fine. Everything is okay, whatever you feel like, home cooked. But with this chutney. Okay, let's move on. Dinner I am not mentioning because dinner is generally very, very light. Maybe, you know, it's a cup of soup, pure vegetable soup, and absolutely